کو آزاد نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں. آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہے, آدمی اپنی مرضی سے مرے گا نہیں. تو موت اور زندگی کے درمیان کی زندگی کو اپنی مرضی سے کیسے گزارے گا؟ Allah subhanahu wa ta'ala has given this deen so that we can have discipline. Deen is all about discipline. We have not been given a freedom. We don't have the liberty to live the way we want to live. But Allah subhanahu wa ta'ala has given us a discipline so that we become obedient to our deen and live a proper life. And why Allah has given this discipline? Because and taken away the freedom, because we did not have the freedom to come into existence. It is Allah who brought us into existence. Neither we have the freedom to die. We don't have the choice to die, but it is Allah subhanahu wa ta'ala who will take the life away from us. So when our beginning and our end is in control of Allah subhanahu wa ta'ala, then why would Allah subhanahu wa ta'ala leave us free in between? دین اللہ نے بہت آسان بنایا ہے. دین اللہ نے بہت ہی آسان بنایا ہے. کہیں بھی آدمی رہے, کسی جگہ بسے, آدمی اللہ کے دین پر چل سکتا ہے. حق تعالیٰ شانہ نے آدمی کو زندگی کے اندر جتنی چیزیں چاہیے, دنیا میں آدمی کیا چاہتا ہے؟ عزت چاہتا ہے. آدمی عزت چاہتا ہے, برکت چاہتا ہے, راحت چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, حفاظت چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا, یا غلام احفظ اللہ یحفظک, اے لڑکے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. ٹھیک. Allah subhanahu wa ta'ala, we all, we have a need. Since we came into existence, there is a lot of things that we need in our life. We all want a comfortable life. We all want honorable life. We all want easy life. Allah subhanahu wa ta'ala has connected all this, that nature, that our nature, our existence wants with deen. It is all with deen. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us a very practical deen. It doesn't matter where we live, and it doesn't matter what is the living condition. Deen is practical on every individual. Easy, practical. And Nabi alayhi salatu wasalam, he mentioned a hadith, he said that, oh ghulam, oh son, oh boy, you protect deen of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will protect you. تو میرے بھائیوں, اب تعالیٰ شانہ نے ساری خیر, ساری برکتیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے. جہاں آدمی محنت کر کے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو لائے گا, محنت کر کے میں آپ اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو, اللہ کے احکام کو, اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں گے, اللہ ساری خیر, برکت, راحت, عزت, عافیت, سکون, چین, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا مقناطیس, میگنیٹ, لوہے چمبک جو ہوتا ہے, آپ لوہے چمبک کو رکھو بھی کسی ٹیبل پر اور اس کے آس پاس کے اندر لوہے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بکھیر دو, تو کیا ہوگا؟ لوہے چمبک ساری چیزوں کو اپنے ساتھ کیا کر لے گا؟ کھینچ لے گا. وہ خود بخود اس کے ساتھ جڑ جائے گی, اور اتنی طاقت کے ساتھ جڑے گی کہ اگر آپ اس کو الگ کرنا چاہیں گے تو الگ نہیں ہو سکے گی. بالکل میرے بھائیوں, ہم آپ میرے دوستوں بھائیوں کسی کنڈیشن میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ مسلمان کی عزت اور کامیابی رکھی ہے. مالدار ہے, کامیابی چاہتا ہے, دین کے ساتھ رہے. غریب ہے میرے بھائیوں, کامیابی چاہتا ہے, دین کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے. جب تک مسلمان محنت کر کے اپنی زندگی میں دین کو نہیں لائے گا, میرے دوستوں بھائیوں, کبھی یہ دنیا میں آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. Therefore, we need to bring deen in our life so that we can have a comfortable and a blessed life. Deen is where Allah Tabarak wa Ta'ala has put all the goodness of this world. And it is in deen where Allah subhanahu wa ta'ala has kept all the blessings and rahmah. You and I, we need to make effort of deen and bring all the awamir of Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam, deen in our life, in our family, in our children, in our locality.
Deen will attract the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and all the goodness that Allah subhanahu wa ta'ala has kept in this world. And he gave a beautiful example. You put a magnet on a table and you place all small pieces of metal around it. Naturally, this magnet will attract with a force, and these small metals will come and stick onto the magnet. And the force, depending on the force, it can get very difficult to move it away. Likewise is our deen. We make effort on our deen, we bring deen in our life, we bring deen. Then Allah subhanahu wa ta'ala, this deen will attract the rahmat and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. A rich man, he has wealth, he wants a good life, deen. A person doesn't have much of this dunya, he wants good life, deen. It's irrelevant where we live, what is the living condition. We want a nice, beautiful, comfortable, peaceful life. We want a life of honor, respect and dignity, deen. दीनदारी की जिंदगी आदमी को जाहिर में मुश्किल नजर आती है, बेदीनी की आजादी की जिंदगी की आदमी को अच्छी लगती है, लेकिन मेरे भाइयों, ये दीनदारी की पाबंदी की जिंदगी, इसका अंजाम बहुत अच्छा है। दुनिया के एतबार से बहुत अच्छा है, आखिरत के एतबार से बहुत अच्छा है। और बेदीनी की जिंदगी जाहिर में तो अच्छी लगती है कि आदमी नमाज न पढ़े, कुरान न पढ़े, जिक्र न करें, रोजे न रखें, झूठ बोले, बेईमानी करें, बदमाशी करें, ये तो अच्छा लगता है जाहिर में कि मैं आजाद रहूं, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। एक मिसाल देकर मैं समझाऊं। आपने देखा होगा कि एक बीमारी है, मीठी खुजली समझते हैं जी, मीठी खुजली होती है कि जिसमें खुजाओ बहुत मजा होता है, बहुत मजा आता है खुजाने में। दो आदमी हैं जिसको दोनों को एक एक हाथ पर मीठी खुजली की बीमारी हुई है। अब एक आदमी बेचारा जिसको खुजली हुई है वो जाता है डॉक्टर के पास, इसका इलाज करता है। डॉक्टर इसको टैबलेट, इंजेक्शन, दवाइयां देता है, खाने पीने का परहेज समझाता है, ये सारा परहेज छोड़ देता है, परहेज करता है। और डॉक्टर कहता है देख खुजली आवे ना तो हाथ नहीं लगाने का, खुजाने का नहीं, इसको बिल्कुल हाथ पर कंट्रोल करने का, वो सब चीजें करता है। और दूसरा इसका दोस्त है, इसी को सेम उसी तरह बीमारी है, उसने इसको देखा कि यार ये तो इतना परेशान है, डॉक्टर के पास जाता है, पैसे खर्च करता है और कड़वी दवाइयां खाता है, परहेज करता है, और ये खुजाने का जो मजा है वो छोड़ देता है। मुझे दे, मैं खुजाता हूं कितना मजा आता है, मुझे खुजाता हूं कितना मजा आता है। बोले तू पैसे खर्च करके आ करता है और मैं बगैर पैसे खर्चे वाह करता हूं, खुजाने का मजा लेता हूं, लेकिन अंजाम क्या होता है? जिसने दवाई की, परहेज किया, पाबंदियां की, उसका अंजाम क्या होता है? इसका हाथ अच्छा हो जाता है, इसका हाथ चंद दिनों के बाद दवा इलाज परहेज के बाद अच्छा हो जाता है। और जिसने परहेज नहीं किया, दवा इलाज नहीं करवाया और खुजाता रहा, इस खुजाने से इसके हाथ के अंदर पॉइजन हो जाता है और नतीजा ये आता है कि इसका पॉइजन बढ़ते यहां तक लास्ट स्टेज पर पहुंचता है। तो ये दवाखाने में डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी इसको कहता है कि भाई इसको काट दो, नहीं काटोगे यह हाथ का पॉइजन जहर पूरे बदन में सिरायत कर जाएगा और तुम चंद घंटों में मर जाओगे। बिल्कुल बेदीनी की आजादी की जिंदगी, न नमाज, न रोजा, न तिलावत, न दिन की मेहनत, न 3 दिन, न गश, न चिल्ला। भाई अच्छा लगता है, खाओ पियो ऐश करो, कमाओ खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो कमाओ बच्चे पैदा करो, अच्छा लगता है, लेकिन अंजाम इसका बहुत बुरा है। हमारे लिए भी, पीछे आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत बुरा अंजाम है। और अगर आदमी मेरे भाइयों समझ गया, अपने आप को उसने संभाल लिया, तो फिर इसका अंजाम इसके लिए भी बहुत अच्छा है, पीछे आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा अंजाम हो जाता है। So my brothers, the life of deen, the discipline seems difficult. On the apparent, it looks difficult. You know, you have restrictions, you have do's and don'ts, and you have a discipline to follow. But on the contrary, when you look at the life of freedom, it seems quite comfortable, and it seems quite enjoyable, and it looks very easy. You don't have to pray, you don't have to fast, you don't do zikr, you don't come to masjid. You know, you have a life of freedom and you're enjoying it.
But when you follow the discipline of deen, then you have a lot of restrictions. What we need to understand, though the outlook of it seems like we are in a very restricted environment and we don't seem to have a freedom to enjoy, the end result of a disciplined life in this world and the hereafter is very, very rewardful, very pleasing, very comfortable, and very beautiful. On the other hand, if we live a life of freedom, and if it seems enjoyable, but my brothers, at the end of this life, it is very harmful, dangerous. It's a great loss in this world and in the hereafter. This is what we need to understand. Discipline of deen will bring us good in this world and the hereafter. And if we are indisciplined with our deen, then we are actually heading towards destruction in this world and in the hereafter. And he gave a beautiful example to explain. Example makes things easier to understand. He says two friends, they have skin dermatology, they have a skin issue, and they both have the itchy skin. And he called it sweet itch. You know, it's like really nice, you know. Sometimes you get that itch. It happens to all of us, I'm pretty sure you must have experienced. You know, you get an itch and it's so nice, you know, you sit there and you itch and you itch. One person, the first person, he decides to go to the doctor. He sees a doctor, he visits a doctor. He gets the doctor's advice. The doctor tells him, look, I'm going to give you a medication. It doesn't taste very nice, but you have to take this medication. And you have, possibly it could be an allergy, so stay away from so many different types of food. And refrain from this and refrain from that. And make sure, when it's itchy, don't touch. Don't itch. Keep your other hand in control. And take care of yourself. This is one person who goes to a doctor and now he follows his discipline. The other person looking at him and laughing at him is his friend, man, you are silly. This thing is so nice, you know. Why are you wasting your money and taking, you know, all these medications and staying, you know, refraining yourself from so many things that, look at me, man, I'm enjoying it. I'm not even spending my money. You spending and suffering, I'm not spending and I'm enjoying. And he continues with his itch. What is the end result? The person who followed the discipline, at the end, he got treated. He became well. His problem went away. His life continues normal. The other person who did not follow the discipline, who did not bother going back to the right discipline and enjoyed the freedom or the joy of that itch which he didn't realize, will have a consequences. Eventually his itch and his problem went all the way up to his shoulder. Now he goes to the doctor, problem's getting bigger, it's not getting, smaller, it's not getting solved. Now he goes to the doctor has a look and says, you know what, you've come very late, mate. The only option we have is amputate. Take your arm off. Otherwise this disease will kill you eventually with poison. This is the result when we don't have a discipline. That's why, my brothers, we need to make effort. Bring deen in our life. Bring deen in our family. Establish, the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Establish deen so that Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the khair and good of this dunya and the hereafter. If we do not discipline ourselves, with our deen, then we are heading straight into destruction in this world and the hereafter. आदमी जितनी अपने बीवी बच्चों के खाने पीने की फिक्र करता, इससे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत मेरे भाइयों अल्लाह के दीन के बारे में है। खुदा के दीन के बारे में सबसे ज्यादा मुझे फिक्र करनी चाहिए। मेरी जिंदगी में अल्लाह का दीन कितना है, मेरी पाबंदी कितनी है, मेरे बच्चों में कितनी पाबंदी है। अल्लाह के नबी हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, पैगंबर हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि माज़ा तअबुदून मिन बअदी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के मौके पर अपने सारे बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद क्या फरमा रहे? इस वक्त कहने की मौत के वक्त बहुत सी चीजें होती हैं कि बेटे तुम इज्तिमाई तौर पर रहना, मिलजुल कर रहना, मोहब्बत से रहना, ये करना वो करना। नहीं,
قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے مجھے آپ سب کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ فکر کرنے کی چیز جو یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں کہی وہ کیا تھی؟ بیٹے یہ بتاؤ، میرے اس بڑھاپے نے دنیا کے اندر بہت ہی اتھل پاتھل کو دیکھا ہے اور بدلتے رنگ دنیا کے دیکھے ہیں، تم یہ مجھے یہ بتاؤ، میری آنکھیں موت کے وقت اس وقت تک بند نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک تم مجھے یہ اطمینان نہ دلا دو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، ان کی اولاد کون ہے؟ یوسف علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں۔ ایک نبی اپنے بیٹوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہے جبکہ وہ پورا نبوت کا گھرانہ ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم آپ سوچیں ہم اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بارے میں کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین ہے تو میرے بھائیو یقین کیجئے اللہ حفاظت کر لے گا، اللہ ہماری نسلوں کی دین کے ساتھ حفاظت کر لے گا۔ آپ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد بھوکے نہ مرے، پیاسے نہ مرے، پریشان نہ ہو، اپنی زندگی پر کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا ہے، ان کے نام پر اچھا بینک بیلنس چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ میری اولاد اچھی طریقے سے جیے۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، آپ کی میری سوچ ایک حد تک یہ برابر ہے، لیکن یاد کے رکھیں ہماری نسلوں کی جو حفاظت ہے وہ پیسوں پر نہیں، ایجوکیشن پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں، جائیداد اور ملکتوں پر نہیں، وہ دین کے ساتھ ہے۔ اگر آدمی اپنے پیچھے اپنی اولاد میں اللہ کے دین کو چھوڑ کے مرا ہے تو انشاءاللہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ ان کی دیکھ بھالی کر لے گا، اللہ ان کی حفاظت کر لے گا۔ اگر آدمی نے میرے دوست بھائیوں اپنے پیچھے دین کو نہیں چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لاکھوں کروڑوں کی دنیا آپ چھوڑ کر چل جائیں، ملین چھوڑ کر آپ چلے جاؤیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اگر اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی مال ملکت پر اولادیں لڑے گی، جھگڑے گی۔ اور میرے دوست بھائیوں، باپ کی مٹی قبر میں پہنچنے کے بعد بھی دنیا ہماری ساری بے عزتی کا تماشا دیکھی۔ ہاں، اولاد کو، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اولادوں کو دیندار بناؤ۔ یہ میرے بھائیوں سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دیکھو، اولاد کی بے دینی، اولاد کا بے دین ہونا یہ ایسا دکھ ہے، ایسی تکلیف ہے اور ایسی میرے دوستوں بھائیوں یعنی دردناک چیز ہے کہ آدمی خود برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، برداشت کے باہر ہے، اور کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ اپنی گھر کی عزت کا سوال ہے کہ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، میری اولاد دین پر نہیں ہے، جمعہ نماز نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تلاوت ذکر کی پابندی نہیں ہے، خدا کے دین سے کوسوں دور ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہم سب کو فکر کرنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ My brothers, we have a very great responsibility. We all here, we have this experience. We know, we understand the responsibility that we have over our family, our wife, our children, how much each one of us are concerned, to provide them. Concern of deen should be even greater than that. The concern for deen, that how deen can come into the life of my family, in my house or in my home, should be far greater than the concern, the fikr, the focus that we have on providing the provision to the family. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran about Yaqub alayhi salatu wassalam. And this is an eye-opener to each and every one of us. The incident that Allah mentions in the Quran, Yaqub alayhi salatu wassalam, he is a Nabi, he is a prophet. At the time of his death, closer to his death, he gathers his children. And like any dying father, what will be the concern? The concern usually, what you do when I leave, when I go, how you look after one another, be nice to one another, be one, and be kind, and so on and so forth. Yaqub alayhi salatu wasalam, he said, my son, I have seen and I have experienced a lot in my life. In this old age of mine, he is a Nabi. He is effort on his children. His children are obedient.
and they are the progeny of the prophets of the Nabi, Anbiya. He doesn't have itminan. He says, I have no itminan until I know that, and Quran says that who will you worship when I leave, when I go? I don't have itminan. I can't live with satisfaction. I can't live, peacefully unless I know who will you make ibadat to, what deen will you follow once I have gone from this dunya. If a Nabi, Yaqub alayhi salatu wasalam, has so much fikr about his children, being a Nabi, progeny of Nabi, children are being trained and nurtured by Nabi, yet his concern is, what will happen to my children when I leave this dunya? Bringing deen in family is so important. This incident in the Quran is an eye-opener. How much effort have we done? What fikr, what concern do we have for our family? How much have we prepared them? What will be their condition when we are gone? Have we given them deen? Have we taught them salat? Have we, given them enough deen that when I depart, when I leave, all the khair is with them? There is no harm. Every father, he tries to make an effort, educate the children, get them into a good job, get them into a business, get them a house, get them a wealth, and leave, so that when a father leaves, he knows that his children are comfortable material-wise. No harm. But we have to understand, all the khair, all the comfort, the honor, and the tranquility, and the peaceful mind and life is not in the materials. If only we give deen to our children, then we can have satisfaction that once I'm gone, my children will be taken care of, because they have deen, and deen will always bring them rahmah, deen will always bring them good, deen will always keep them honorable. Then only we can have itminat and leave this dunya. Making arrangement, there is no harm. Deen is very important. Without deen, we have seen, and I'm sure many must have experienced, there are many scenarios, many cases. The father has passed away, left behind a beautiful legacy, wealth, buildings and what not. Before the father has gone into the grave, the children are already fighting over their shares, because there is no deen. After the father is buried, the whole world sees the disgrace of the father, because the children are now fighting until the court case. This is because we haven't left behind deen. If you don't leave behind deen, this is the result. Therefore, it is very important to understand and to realize the importance of bringing deen into our homes and leaving deen behind for our children. Then we know that their future in this world and the hereafter is guaranteed. मेरे भाइयों, घरों में दीन कैसे आएगा? घरों में कैसे आएगा दीन? देखो, घरों में दीन आएगा जब सबसे पहले मैं अपनी जात से पाबंद बनूं। मेरी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए, मेरे हाथ में कुरान हो, मेरे हाथ में तस्बीह हो, मैं अपने मकाम पर मस्जिद में मशरे में बैठूं, मैं अपनी मस्जिद के अंदर रोजाना 2.5 घंटे की मेहनत में, दावत की मेहनत में जुड़ूं, मैं अपने घर में किताब की तालीम करूं। मेरे भाइयों, हर घर में बच्चों के लिए आइडियल इसका बाप और इसकी मां होते हैं। आइडियल कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। हमेशा औलाद वो करती है जो माँ बाप घर में करते हैं। आप देखो, घर में बीवी नमाज पढ़ती हैं तो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? माँ के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, हालांकि इनको कुछ पता नहीं, बस वो माँ की नकल उतारते हैं। माँ की नकल उतार। आप सर पर टोपी रखिए, आपका बच्चा भी टोपी सर पर रखेगा। क्यों? आप इसके लिए आइडियल है। सबसे पहले मुझे अपनी जात से अपने आप को अमाल के पाबंद बनाने की जरूरत है। How deen will come in our homes, how deen will come in our life or in our family, we have to become an idol. We have to become an example. If I bring deen in my life, deen will enter my home, my family. If I am punctual with my salah, if I have Quran in my hands and I'm reading my Quran, if I make zikr, if I go to masjid,
if I participate in the effort of da'wah, if I go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then my children will learn. Remember, every child, their best idol in their home is their parents. They see what the parents do and they copy. You must have seen. If the mother and the father both. Mother stands in the salah, a little baby, 1-2-year-old, can hardly barely walk. They fall in sajda. They try and copy the mother. If we bring deen in our life, then only if I wear my hat, my baby growing up will wear a hat. So we have to become an example in our home of example of deen. And this is how deen will come in our homes and in our family. घरों में दीन जो आएगा वो घर वालों को आमाल की रग़बत दिलाने से आएगा, शौक दिलाने से आएगा। घर में गर्मा गर्मी करने से, गुस्सा करने से नहीं होता है। इसीलिए हमारे बड़े समझाते हैं घरों में तालीम का अमल करो। फ़ज़ाइल अमाल की किताब का तालीम का अमल, घर के लोग 10 मिनट 15 मिनट सब फैमिली के मेंबर जमा होकर इस किताब को पढ़ो। इसमें अल्लाह और उसके रसूल की मुबारक बातें हैं। ये वो बातें हैं जिसको सहाबा ने सुना था, मर्दों औरतों ने, अल्लाह ने इनकी जिंदगियां बदल दी। अल्लाह ताला ने आज भी अपने नबी की बातों के अंदर ये असर रखा है जो 1400 साल 1500 साल पहले था। ये नहीं है कि आज इन बातों की तासीर खत्म हो गई। भाई 1500 साल पहले इमली नींबू खट्टा था, आज भी खट्टा है। 1500 साल पहले गुड़ शक्कर मीठा था, आज भी मीठा है। 1500 साल पहले नीम करेला कड़वा था, आज भी कड़वा है। 1500 साल पहले नमक खारा था, आज भी खारा है। भाई दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब पैदा हुए, आए गए, लेकिन इन चीजों की तासीर खत्म नहीं हुई। क्या ख्याल है मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की बातों की तासीर खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं हो सकती है। शर्त यह है मैं आप अपनी फैमिली को टाइम दें, इनको लेकर बैठें और इनके सामने 10-15 मिनट इस किताब को लेकर पढ़ने सुनने का एक घर में माहौल बनावे। अल्लाह ने इसका हुक्म अपने नबी की बीवियों को दिया। किसको दिया? हजरत सौदा को, हजरत आयशा को, हजरत ज़ैनब को, हजरत हफ्सा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। अल्लाह ने नबी की बीवियों से कहा कि अल्लाह की आयत और नबी की बातों का आपस के अंदर क्या करो, बोलो, मुज़ाकरा और चर्चे किया करो। जिन बातों की नबी के घराने मोहताज हैं, क्या मैं आप न्यूजीलैंड में रहते हुए इन चीजों के मोहताज नहीं है? हम सबसे ज्यादा इसके मोहताज हैं मेरे भाइयों। हम आप तालीम करेंगे, घर के बच्चे, घर की बीवी, ये सब हमारे फेवर में हो जाएंगे। ये दीन का साथ देने वाले बनेंगे। अमाल पर जिंदगी आएगी, इनके दिलों में हमारी कदर पैदा होगी। अमाल पर जिंदगी आएगी, इंशाअल्लाह घरों के अंदर खैर और बरकत पैदा होगी। और अगर इस बात की फिक्र नहीं की गई तो याद रखना मेरे भाइयों, क्या देखोगे जानते हो? देखो औलाद बड़ी हो जाएगी ना, इसके बाद वो माँ की पार्टी बन जाएगी, माँ की तरफदारी करेगी। जवान बच्चे हो जाते हैं फिर वो किसके हो जाते हैं, बोलो? माँ के हो जाते हैं। बाप अलग हो जाता है, माँ अलग हो जाती है, बच्चे भी माँ का साथ देते हैं। आदमी मस्जिद में पहली सबका नवाजी है, हाजी है, उम्रे पर उम्रे करता है, मदरसे मस्जिद को लाखों रुपया चंदा लिखवाता है, लेकिन घर में जब गमी खुशी का मौका आएगा तो शरीयत सुन्नत नहीं आ सकती है। घरों के अंदर समाज और रिवाज की बातें चलेगी, शरीयत सुन्नत को सो दूर हो जाएगी। क्या बात है? बात यही है, आदमी यही कहेगा, क्या करे घर की औरतें मानती नहीं है। भाई क्यों? तुमने मेहनत क्यों नहीं की? मेहनत क्यों नहीं की? तुम बीवी को लेकर बैठते, समझाते, तालीम के हलकों में निकलते, कभी इसको 3 दिन जमात पे लेकर निकलते, वो समझ जाते। औरतों में तो बहुत अल्लाह ने इस्तिकामत रखी है। हाँ, हमारे ये एशियन जो औरतें होती है ना, आप देखें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जिंदगी पर खाना पकाती हैं, जिंदगी पर कपड़ा धोती हैं, जिंदगी पर घर साफ करती हैं। वो जिस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है, मौत तक उस जिम्मेदारी को निभाती है, इसको कभी बोझ नहीं समझती है। हम आप मेहनत करके दीन समझा दें, नमाज समझा दें, तिलावत समझा दें, अस्कार समझा दें, तालीम के हलकों के रास्ते से इसका दीनी ज़हन बना दें, इंशाअल्लाह इसकी गोद में हमारी औलाद जो पलेगी ना, वो इंशाअल्लाह बड़ी हो जाने की बात क्या बनेगी, बोलो? दीनदार बनेगी। वरना आप भी मेरे दोस्तों भाइयों क्या है, अगर मेहनत को छोड़ देगा तो घर में फिर सिर्फ एक अकेली बीवी की चलेगी। कुरान में बलम बाउरा का किस्सा लिखा है। बलम बाउरा एक आदमी था बनी इसराइल के अंदर, मुस्तजाब दावत आदमी था।
We have to establish deen in our family. The other method is one that we become an example. The other method, my respected brothers and elders, is establishing ta'aleem. The purpose of ta'aleem, we need to create a very compassionate environment. Deen cannot be forced. We can't force any individual to practice deen. But we can present deen with compassion. How do we present and create that compassionate environment? Is through ta'aleem. The importance of ta'aleem and the nur and the barakat of ta'aleem. Ta'aleem are the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These are the words that changed the life of Sahaba Ikram. These are the hadith, these are the events that we read that has changed the life of Sahaba Ikram. And that's why it is said, our elders, they say, that you read this book, you read this hadith, you read this fadail, you read the words of Rasulullah alayhi salatu wasalam, that had the impact on people around him and changed their life to such a level, such a status, that we all know the status of Sahaba Ikram. It has an effect. Ta'aleem has an effect. The words of Rasulullah alayhi salatu wasalam, it has an effect on the heart. And this effect of ta'aleem, or the effect of hadith, and the sayings of Nabi alayhi salatu wasalam, don't get deceived. 1500 years ago it has faded out, na'udhu billah. It hasn't faded out. 1500 years ago lemon was sour, today lemon is still sour. 1500 years ago certain fruits that were sweet, they are still sweet today. Salt was salty 1500 years ago, today it is still salty. It hasn't faded out. Likewise, the political situation, geography of the world has changed a lot ever since. But as the nature remained the same, is also the effect and the impact of the hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, and it will last until Yawm al-Qiyamah. It has an effect. It has an impact. It has that awe, that power, that energy, that nur that will change the heart, that will change the life. To such an extent, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran instructed the family, the wives of Nabi alayhi salatu wasalam, Ummahatul Mu'mineen radiyallahu anhunna, for them to read, to revise and to read and to repeat what they hear from Nabi alayhi salatu wasalam. This is their home ta'aleem. Allah mentions in the Quran, they are the mothers of the believers. They are the family, the household of Nabi alayhi salatu wasalam. Even they have been given the instruction to repeat the words of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Because it has that nur, it has that effect, it has that impact that it will change life. We need to bring this, we need to establish this, and then through this ta'aleem, we'll start changing, inshallah ta'ala, the family and the family members. Otherwise, if we ignore the effort, the deen, or the effort of ta'aleem and the nur of ta'aleem, and if we ignore our family, we will see, my brothers, gradually family grows, children grow, and you will see, and this is experienced across the globe, as the kids, they grow and they become in their teens, they all start to go towards their mother. This is the nature. Children will go more towards their mother. Father, he gets singled out. And that's why we have seen, and there are many examples, an elderly person, mashallah, very paband in his deen. He is regular in the masjid. He is regular with his hajj and umrah. He is regular with his ta'aleem, with his ta'aleem and his khuruj. And he, mashallah, prays right in front. First stuff. This is his deen. But when comes an event at home, some function at home, there is no sharia in the function. The function is now hosted according to the culture. What happened? Then he says, family, they don't listen to you. Try and tell them they don't understand. Where's the mistake? How did this happen?
because I did not make the effort from day one. I did not make the right effort from day one. Had I made the effort on my wife and my kids, they would have been with me in my deen. Because I neglected the effort, because I did not take the chance and the opportunity when I had, when I knew, when I understood, and I overlooked, now you have lost the family. Now your own children, now your own wife is not prepared to listen to you. My brothers, this is why we established deen, to bring deen in our life, so that we grow together, we nurture together one another, we become supporters of one another in deen, and as a family, as a whole, we are following deen and supporting one another on deen. If we do not make an effort, if we don't take time out, if we don't give importance to this ta'aleem, it is very difficult to bring deen in our family, in our home, without creating a compassionate environment, and that compassion will come through ta'aleem. इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तबलीग की मेहनत जिंदगियों में अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत है, अल्लाह का दीन लाने की मेहनत है। हाँ, ये जमातों में कहते हैं 4 महीने निकलो, 4 महीने निकलो। क्यों निकलो भाई? ताकि जिंदगी में अल्लाह का दीन आए। मकाम पर है, हम आपसे कहते हैं भाई आप जिस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं वहां मस्जिद और जमात है, इसके साथ बैठो, इनके साथ फिक्रों में शरीक रहो, मेहनत में शरीक रहो, दर मस्जिद की तालीम के अंदर रहो, गश्तों में शरीक रहो। ये मेहनत के असबाब है। ये चीजें दिखने में सादी सीधा काम है, एकदम सिंपल काम है, लेकिन मेरे भाइयों इसके पीछे अल्लाह ने बहुत बड़ी हिदायत छुपा के रखी है, बहुत बड़ी हिदायत छुपा के रखी है। इसलिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस काम की सादगी से लोग धोखे में पड़े हुए हैं कि दिखने में सीधा सादा काम है। कोई आदमी 3 दिन जाता है, 4 महीने जाता है, चिल्ला जाता है, गश्त करता है, तालीम करता है, इसकी सादगी से लोग धोखे में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, काम सादा है, लेकिन इसका नफा नस्लों तक का है। आदमी खुद भी महफूज रह जाएगा, इसकी नस्लें भी महफूज रह जाएगी। और अगर मेरे भाइयों आपने अपने आप को दुनिया कमाने के अंदर ही लगा दिया, तो दुनिया कमाना कोई कमाल की चीज नहीं है। हाँ, ये फाहिशा औरतें एक रात में लाखों रुपया कमा लेती हैं। दुनिया कमाना कोई कमाल की बात नहीं है। असल कमाना आदमी के लिए दीन का कमाना है, दीन जिंदगी के अंदर लावे। अगर इस मेहनत को छोड़कर आप मेरे भाइयों अपनी दुनिया के नक्शों को बनाने के अंदर लग गए, खुदा वहदहू ला शरीक लहू हम सब की हिफाजत फरमावे। मेरे भाइयों, हम लोग तो मुल्कों में सफर करते रहते हैं, जमातों की निस्बत पर हमने वो ऐसी फैमिलियां देखी हैं, ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी जिंदगियों के अंदर ऊपर में दीन था, जब मेहनत छूट गई तो मेरे भाइयों घरों से दीन निकल गया। अरे दुनिया लोग छोड़कर गए थे, दुनिया भी खत्म हो गई। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपनी औलाद के लिए दीन छोड़ा, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपनी दुनिया औलाद के लिए दुनिया छोड़ो। दोनों बनु उमैया के बादशाह हैं, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दीन छोड़ा था, बाद में अल्लाह ने इनकी औलाद को चमका दिया। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये भी बनु उमैया का बादशाह था, लाखों करोड़ों की दुनिया अपनी औलाद के लिए छोड़कर मरा था। लेकिन तारीख ने लिखा है, एक जमाना वो आया है कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक की औलादें दमिश्क में जुमा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रही थी, ये मस्जिद हमारे दादा ने बनाई है, तुम हमें अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। ये मस्जिद हमारे दादा ने बनाई है, तुम हमें अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। क्या बात है, बेदीनी है। अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों भाइयों हम सबको एक बहुत अच्छा मौका दे रखा है। हम अपने आप को मेरे भाइयों दीनदार बनाने के लिए इस मेहनत के अंदर जुड़े, लगें, लगावें। हाँ, 4-4 महीनों के लिए निकलें और मकाम पर रहते हुए मेरे भाइयों अपने आप को मकामी अमाल से जोड़ें। तबलीग कोई तबलीग वालों का काम नहीं है, हर मुसलमान का काम है। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है उस पर यह जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां कोई गटर है जिसका ढक्कन टूट जावे और गंदा पानी बहने लगे, तो जिसके सामने घर है वही फिक्र करता है या पूरी सोसाइटी फिक्र करती है? किसी मकान में अल्लाह न करे आग लग जावे तो खाली वो मकान वाला फिक्र करता है, पूरी सोसाइटी फिक्र करती है। किसी बिल्डिंग के सामने कोई जानवर मर जावे, सड़े गले बांस मरे, तो इसको हटाने की फिक्र खाली घर वाला करता है या पूरी बिल्डिंग सोसाइटी वाले मिलकर फिक्र करते हैं?
میرے بھائیو امت میں 100% دین کو زندہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہاں میری زندگی میں دین آوے, میرے گھر میں آوے, میری سوسائٹی میں آوے اور پوری امت کے اندر اللہ کا دین 100% زندہ ہو جاوے. اس کے لیے محنت فکر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے میرے دوستو بھائیو یہ اجتماعات ہیں اور ان اجتماعات سے تشکیلیں ہیں اور اسی کے لیے میرے دوستو بھائیو سب سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو 4 مہینے کے لیے نکلو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دل کی تمنا ہے ہر مسلمان کا انتقال سے پہلے 4 مہینے لگ جائے. ایک حضرت سے کسی وہ ہمارے یہاں کرناٹک میں چک منگلور ایک شہر ہے, وہاں کے ایک ذمہ دار سے انتقال فرما گئے. ایک مرتبہ ہمارے ساتھیوں سے کہنے لگے وہ بہت پرانے آدمی تھے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی تھے, بہت بڑے نظام الدین کا. ایک مرتبہ نظام الدین کے اندر ایک جنازہ آیا. لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ. حضرت تشریف لائے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی اس مرحوم کے 4 مہینے لگے تھے؟ لوگوں نے کہا حضرت نہیں, اس کے رشتے دار اللہ اس کی مغفرت فرما لے. یہ کہہ کے آپ نے رکعت باندھی, جنازے کی نماز پوری کروا دی. لوگ اٹھا کر چلے گئے, پیچھے قبرستان نے دفن کر دیا. چند مہینوں کے بعد ایک اور میت آئی. حضرت سے پھر درخواست کی گئی کہ بھائی 4 مہینے حضرت کیا آپ نماز پڑھا؟ حضرت تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے اس کے رشتے داروں سے پوچھا بھائی اس کے 4 مہینے لگے تھے؟ لوگوں نے کہا جی حضرت. حضرت نے فرمایا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. کیا فرمایا؟ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. پہلے سے کیا کہا؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دوسرے سے کہا بھائی کلندر آنچے گویا دیدہ گویا. ہاں میرے دوستو بھائیو اللہ والے سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی زندگی کی پہلی فرصت میں 4 مہینے تھے, تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. تو اس اجتماع سے ہمیں نقد 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ. For this deen, my respected brother, that he has been talking about, to come into my life, to become an adult at home, and then eventually to be come to my family,